Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And today is a Wednesday session, which is a session for all the people, people in the group, as well as for all the guests and all the family members who are invited here. So a big welcome to all of you. Today, the agenda of the topic for the session today is the journey of transformation. Yes. Journey of transformation from depression to joy. So that is what the session is today. Okay. So I am sure many of you would have seen the post and would have heard the topic. But what comes to your mind when you hear this word transformation? When you hear this word journey, it's a journey from transformation from depression to joy. What does it click in your mind? How many of us have heard people who have suffered from depression who are in our life? Yeah. So either we ourselves have at some point of time gone through the trauma or the mental state. And sometimes we know some people who are important in our life and who have gone through that and what all they have faced in our life, right? In their life. So we know that this is not a very rare phenomena. In fact, it is becoming more and more common in our day-to-day life. Many people who are suffering and they are very, very miserable in that condition. And the worst part is they are not even aware of it. Most of the people, when they are in this kind of state, they are not even aware of it and they have completely lost all hope. They're completely into a, you can say a state of mind where they are absolutely helpless. So they are in a state where they are hopeless, they are absolutely helpless, and they feel very miserable, frustrated, desperate. So all these are adjectives which go with that condition of depression. Okay. So before I start this topic, I would like to have some sharing from some of you so that we are clear about what are the kind of symptoms that somebody can have during this condition of depression. तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा या कुछ लोगों का एक्सपीरियंस हुआ होगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि डिप्रेशन के साइंस क्या हैं. So I'm not talking of the whole story now. I'm just talking of the indications that can possibly help a person to understand that someone else or he himself is going through that particular phase. तो ऐसे क्या signs हो सकते हैं of depression? And then we will see the analysis, and then we see the root cause analysis, and then we see how we can move from that state, that negative, doomed kind of a state, to a blissful state of joy. That is what we will look at. Yes. Not being interested in anything, sir. Pardon? Not being interested in anything. Okay. Like so even totally though it's our uninterested. favorite thing. Yeah. So totally uninterested, correct? In life, Yes. I would say. Okay. Yeah. That's a good part. Yeah. Yes, Gunjanji, you have raised your hand. Go ahead. When it is my personal experience, like way back in 2015, I had my first depression attack, and then मुझे हर चीज से डर लगता था, बहुत ज्यादा. Okay. इवन दीवारों से ऐसा लगता था बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी. तो फियर, फोबिया, एंड आई वाज टोटली ब्लैंक. कुछ भी हो रहा होता था मेरे सामने, मुझे पता ही नहीं होता था कि कुछ हो रहा है मेरे सामने. So that is my personal experience. Okay. So totally living in a world of fear, totally disconnected. Yes. I would say that. Yes. Disconnected from life, and absolutely unrealistic phobia kind of a thing. Unrealistic fear, है ना? Yes. घर गिर जाएगा, दीवारें गिर जाएंगी, kind of a thing. So it is totally unrealistic. Everybody can connect with this. So a state of mind when you are thinking of all the impossible fears. So fear is a very, very important emotion behind the state of depression. We need to understand that. So when somebody is in that state, fear could be a very, very profound emotion which can be running his life. Totally uninterested, as Rajesh said, and totally disconnected from life. No realistic understanding. Understanding is gone for a toss. You have to understand that first, right? Okay, let's have more people share. What are the other signs? Can I speak? Feeling very low and hold on. One by one, we will come to everybody. Don't worry. Yes, Sylvia, you go ahead.
feeling extremely low and Okay. very emotional, very touchy about everything. Okay. So very Yeah. sensitive. Sensitive. Very Yes. sensitive. Yeah. And very emotional means कौन सा emotion है हमको वही देखना है. We are looking at the emotion behind that state, है ना. तो जैसे जो गुंजन जी ने कहा, it could be fear, it could be lack of interest, it could be lack of purpose of life, no purpose in life, right? And in what you have just shared now, it is what would that be? Emotion क्या होगा उसके पीछे? Sylvia ji, you just mentioned it. What was it? Feeling very low. Low. Yeah. So feeling very low means what? Sad. Sad. Extreme sadness. Total, you can say, life is devoid of all kind of joy. Inability to experience joy. That is what I would say. Yeah. It is an inability to experience joy. Practically nothing is wrong in life. If you ask somebody, why are you feeling so sad? No reason. But just unable to smile. Smile नहीं कर पा रहे. Imagine. Inability to experience joy in life. Small चीजें छोड़ो, बड़ी खुशियों में भी उनको खुशी नहीं हो रही है. So that is a mental state. You have to understand, right? So the emotion जो हमने दो अभी main emotion हमने देखे, which can be the cause of the depression could be emotion of fear, emotion of sadness. Sadness leads to depression. We know that, right? Any traumatic experiences, breakdown in relationships, it could be one. Correct? When you have lost total interest in life, lost all the joy and happiness in life, could be that. So it could be one incident in the outside world. It could be one attachment to a person who is no longer now in life. So when a death of a partner happens, the person who is left behind is in a state of depression, cannot express the sadness, and in that condition they go into a depression state. They don't enjoy life. They don't experience joy in life. There is no purpose. There is no meaning of life. Everything is gone. Correct? So you have to understand the condition in which they are. So it is a persistent, continuous state of mind where someone is unable to, or inability to experience joy or peace or love. So love, peace or joy missing है life में, and they are unable to experience it. That will lead to a state of depression. Everybody okay with me? Agreeing with me? Okay, let's have more people share. Anybody else who has any experience? Yeah, can I Yeah, speak? I was just. Yes, Jyoti Okay, ji, go ahead. you go. Yeah, Jyoti ji, go ahead. Okay. Yeah. Even I have experienced depression for a very long time. And the main problem with depression is that कि पहले तो समझ ही नहीं आता कि ये depression है कि हम किस चीज से we are undergoing through what. तो basically इसमें anxiety की बहुत problem रहती है. And I used to cry a lot also. And शशि धर जी को मैंने बहुत बाहर कॉल करके मैं आई यूज्ड टू टेल हिम कि मेरा रोना कम नहीं हो रहा, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि अब डिग्री में कम हो रहा है, डिग्री से वो करो, ये नहीं करो कि इमीडिएटली बंद हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज कि वी आर एंटेंगल्ड इन पैटर्न ऑफ नेगेटिविटी. मतलब हम किसी भी चीज को उस टाइम पे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं देख पाते, हर चीज फियर होता है. And I think this is because of chemical imbalance, and you really need to take a medicine for that. Hold on. We will come to the remedy of that later on. Okay. We just want the indications right now. So thank you, Jyoti ji. You have shared a very powerful message here. Anxiety, fear of the future. अब क्या होगा? हाँ, ये वाली thought आती है ना. Normal लोगों को आती है तो they can rationalize it and they can say, okay, ठीक है. Let's have faith in the divine. Let's hope for the best, and then there is some hope, there is some faith which will pull you through. But imagine if there is no faith, you have lost faith. Totally living in the world of fear means what? Absence of faith. Correct? If you are totally helpless means what? Now you know that you are doomed. कोई help करने नहीं आ रहा, भगवान भी नहीं आ रहा, कोई इंसान भी नहीं आ रहा है. So you are absolutely left alone. Suicidal effects. Hold on. Let me build it up. Okay. Yeah. So total loneliness, you can say,
कोई नहीं है मेरे साथ. Nobody is there to support me. I am alone in the world. Everybody, in fact, another worst thing can be everybody is against me. सब मुझे मारना चाहते हैं. Everybody is out to kill me. अब हेल्प करना तो छोड़ो, सब मारने आ रहे हैं. Everybody is a villain in my life. I can't trust anybody. So these unrealistic thoughts are bombarding you. Correct? You means the person who is in that state. Okay. So unrealistic thoughts. You are living in a world of fear which is totally unrealistic imagination. तो आप एक imaginary world में जीने लग जाते हो जो कि बिल्कुल अनरियल है और उसमें पूरी एनर्जी अपनी निकाल देते हो. So there is no energy left to live your life properly. So there is no understanding, there is no wisdom. And why there is no wisdom? Because you are absolutely cut out from any kind of divine help. You have lost faith in the God. आपका God से भी विश्वास उठ गया है. You don't believe in God. You have no faith in God. Nobody can save me. भगवान भी नहीं बचा सकता, kind of a thing. Correct? So total frustration, total desperation, total hopelessness, helplessness, and there could be one more important factor which could be worthlessness. I am not worthy of enjoying life. I am not worthy of love. Nobody loves me is one story. And I am not worthy of love is a worse story. You are shutting out the possibility of receiving love from anybody now. कोई प्यार नहीं करता, वो अलग चीज है. मैं प्यार पाने के लायक ही नहीं हूं ना, तो possibility is gone. Get my point? So this is the kind of the world that a person is in, and in this kind of state, nothing is going to work for that person because he or she is not able to understand the world in which they are living. They need help. So when you find somebody like this, you should immediately know that they need an expert help. Now, this expert help could be what? Could be doctor, right? Could be a healer, could be a coach, could be a counselor, could be a psychologist. But it needs an expert advice. It needs an expert person to handle them, to pull them out. वो तो डूब रहे हैं, उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा. हाँ, बल्कि हाथ भी ढूंढना पड़ेगा, सारे का सारा अंदर ही है. So you have to actually dive in, get hold of them and pull them out of their दलदल जहाँ पे वो फंसे हुए हैं. So in this condition, depression, the person needs help. That is first thing that you need to do. And expert help. Not anybody can help them, because even if you listen to them with empathy, it is not going to help. That is a normal conversation where you can listen to somebody with empathy, pull them out. But when somebody is in a state of depression, they need some expert help. Everybody okay till now? And what is the worst kind of result of depression? कुछ नहीं बचा, let me end my life. So suicide attempt or actual suicides happen in a fit of a rage when you are in a state of depression. The people who hang themselves, they don't see any hope. अब कुछ नहीं हो सकता. Yeah, they have lost their worthiness. I am not worth it. I am not worthy. There is no hope. I am absolutely helpless. Even God cannot help me. क्योंकि अगर भगवान भी बचा लेगा ये उम्मीद रहती तो वो नहीं जान देते. Right? And that results in suicide attempt or actual suicides. And the incident, for a sane mind, it would look very simple. Exam में fail हो गए, क्या फर्क पड़ गया? 1 साल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Corporate world में कितने लोगों को अपने 2-3 साल गंवाने का experience है? You have lost 2-3 years of seniority in corporate because a junior got promoted. उस समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन 12th के एग्जाम में या कोई 10th के एग्जाम में खराब आए रिजल्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड? कितने लोग हैं जो आईआईटी जेई के लिए पढ़ते हैं, नहीं हुआ सुसाइड? कितना प्रेशर है उनके ऊपर. So they are living in a world of pressure created by the society or by themselves, by their own expectation. Yes or no? And then they decide that I am a failure, I am rejected, I am worthless. और जब I am के साथ कुछ बोलते हैं, it goes into a permanent state of being. How many of us know that I am is a very powerful creation? And if you say I am worthy, it is great. But if you say I am worthless, you are creating that in your life. Yes. So I hope the seriousness of the topic
has gone down with all the participants. So this is a very, very serious kind of a situation for anybody. And that is why it is actually a matter of life and death. So I will not make it more serious now. Let me pull everybody out of it. तो अगर कोई स्टेट में है या था या आप किसी को जानते हो जो स्टेट में है, immediately consult an expert. Whichever expert he is ready to face. If it is doctor, great. If it's a counselor, great. If it's a healer or a coach or a could be a mind coach, could be a hypnotherapist, whatever, he needs an expert help, or she, correct? So that is something which is first has to be established. Yes, Rupa, you have raised your hand. Please go ahead. Shashi, I just wanted to share कि जब like at this age it is very difficult because we have now the wisdom and the understanding कि ऐसे depression होता है, उस age में होता है. लेकिन जब imagine कर जब मैं और तू 12th में थे, कितना pressure था, और अगर हम उधर fail हो जाते तो हमारे पे क्या गुजरती. उस time हमें नहीं समझ आती है कि ये depression है नहीं है. Absolutely. So when somebody is in that permanent kind of a state of sadness or fear or anxiety, the people around in their life have to be very, very alert. He needs an expert help. You cannot stop actually having those thoughts, उस time पे अगर हमारे पे कोई thoughts आती है तो कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय. The person cannot do anything. It is the people who are around who have to understand this. That is why this is very, very important. Otherwise, many people who are committing suicide, who have committed suicide, would have been able to overcome that if somebody had supported them at the right time. But nobody was there. Nobody was aware. Yeah, I think the parents and the family support उस time जरूरी होता है. You're talking of one particular age. It is there for any age and any time. Somebody suffers a major loss in business, he commits suicide. Yeah. A fit of a depression, right? Like I told you, मेरा case, right? अगर मेरा depression, मेरा case में क्या था कि I you know me. I was lively. I wanted to live life. मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, पर इतनी ज्यादा extraordinary restrictions की सांस लेना मुश्किल है. अरे तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो, पर उससे इसमें तुम क्या करो? Depression अपने आप आती है. You have to relax. Stop. Tell me the emotion. What was the emotion? Or the situation? Emotion was frustration, anger, depression, and correct. तो depression की वजह क्या थी? Suffocation, frustration. Yeah. Absolutely right. So you are feeling choked. Yeah. When you are feeling choked, there is absolutely no breathing space. Yeah. And that can be very, very critical. And that is exactly what we are trying to find out, right? So first of all, first point, very good, Rupa. Thanks for sharing that. So first of all, we need to understand that an expert help is required. Everybody clear on this? So if you can identify, great. If you cannot identify, hello. Hanji, Praveen. I just wanted to say, Shashi ji, that some people are not open for help. They just close themselves. Yeah, I understand that. Then how do you help the person? Praveen ji, that's why I said, first of all, you have to, the person who are concerned in their family, they have to take a very, very politely, they have to cajole them that, okay, you need some help, let's go to some place. Maybe healing will help you. Maybe coaching will help you. Maybe an expert, they are expert in their field. They will help you out. Correct? The problem is when we have a physical injury, we have no shame or embarrassment to go to a doctor to get a fracture repaired. आपकी शरीर में हड्डी टूट जाती है एक्सीडेंट से, आप डॉक्टर के पास बड़ी खुशी से जाते हो. खुशी से मतलब पूरे अवेयरनेस के साथ जाते हो. फिजिकल प्रॉब्लम के लिए, बॉडी में प्रॉब्लम है, यू गो टू द डॉक्टर. माइंड में प्रॉब्लम है, व्हाई कांट यू गो टू द डॉक्टर? Nowadays people are very open to it, but earlier they were not open to it. They would feel very embarrassed to go say that I am consulting a doctor. Get my point? So you have to be first of all open about the problem. At least discuss it with somebody who is close to you. किसी पे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा ना. Otherwise जो जान पहचान के लोग हैं, they have to do something. Now I will not debate much into this, but somehow it has to be done. They need expert help. That is how it was. Okay. Yeah. Yes, Rupa, I got that message. That's fine. Correct. So some expert help is required. That is the case from depression. So from the depression, the person has to be pulled out, and then we can do something about that person. Because now दलदल से जैसे बाहर आ गया, पानी में डूब रहा था, बाहर निकाल लिया, survival issue handle हो गया. Now we have to bring him back, and we are not going to just leave him there. We are taking him from a journey of
डिप्रेशन टू जॉय, तो आगे की जर्नी तो अभी बहुत बाकी है. तो फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज व्हेन वी आइडेंटिफाई दैट ए पर्सन इज requires help, so the first step that we are going to do is bring it down, tone it down, give him some hope. Total hopelessness है, give him some hope. जैसे बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, थोड़ी सी होप दो. आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, रिलैक्स, मैं देखता हूँ, आई विल हेल्प यू आउट, वट एवर इज द प्रॉब्लम, टेल मी, काइंड ऑफ अ थिंग. तो एक उम्मीद जगी, होप आ गया. फिर भगवान पे भरोसा रखो, हैव फेथ. तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. फियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए फेथ चाहिए, फेथ इन द डिवाइन. होपलेसनेस को ओवरकम करने के लिए एक छोटी सी होप चाहिए, तिनके का सहारा चाहिए. इट कुड बी ए पर्सन. नाउ लुक इन द आउटसाइड वर्ल्ड. आउटसाइड वर्ल्ड में क्या होता है? वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति, यही है ना. इन तीनों में अगर कोई होप नहीं नजर आ रही है, then the person is gone. So he has to trust some person, he has to trust one situation, he has to have faith in the divine. कहीं ना कहीं से कुछ उम्मीद जगानी पड़ेगी, and then the journey starts. अब एकदम -100 से पहले उसको 0 पे तो लाओगे, उसके बाद 0 से 100 पे जाना है हमको. तो if depression is at -100, joy is at +100. You can't straight away jump there. It has to first come to a neutral level of 0. Yes or no? सिंपल इक्वेशन है ना. तो पहले डिप्रेशन से हमको उसको टोन डाउन करके लाना है. एक्सपर्ट हेल्प मिल गया, थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट किया, थोड़ा ख्याल रखा कि भाई सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह ना कर ले, प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह दिया. बेशक माइंड थोड़ा डल हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, बट समहाउ he or she will be at a place where we can take him to the level of 0. करेक्ट. वहां से बात शुरू होती है कि ये डिप्रेशन की वजह क्या है. अगर फियर है तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया. सैडनेस है तो वो एक्चुअल में, you can say, the actual depression is out of sadness, I would say, when you're told so sad that you're unable to experience love, peace and joy in your life. Correct. Now having said this, you have to see what is the trauma that is really engulfing that person. मतलब वो पूरा वर्ल्ड उसका अंधेरा है, क्या है वजह. Then you look at the incident or the trauma or the person. So it could be in the area of relationship, it could be in the area of a particular result. जैसे कोई फेल हो गया या कोई एक रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हो गया. So these could be the relationship. Somebody has dumped them and they are going into a state of depression. We have seen that in movies, we have seen that in life, right? तो अब आपको ये देखना है कि वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से अगर डिप्रेशन को टोन डाउन करोगे, इट विल फॉर्म ए मेजर अपसेट इन लाइफ. Get that? So just recollect or go back into your life if you know the person. डिप्रेशन की वजह थी एक पर्टिकुलर अपसेट, एक सिचुएशन, एक इंसिडेंट. My internet is showing unstable. Am I audible? Am I audible? Okay, good. So first we tone down the depression to a state of upsets. Now, upset is something everybody has. Yes or no? We have that on daily basis. What are the reasons for upset? Tell me. What makes you upset? Let's have that question. तो अब मान के चलते हैं डिप्रेशन से हमने टोन डाउन करके उसे अपसेट में ले आए हैं कि भाई क्या वजह थी. बिजनेस में लॉस हो गया, माय पार्टनर हैज लेफ्ट और माय पार्टनर हैज पास्ड अवे. हाँ, कोई शरीर भी छोड़ सकता है, उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट. और द पार्टनर हैज सिंपली डम्प्ड देम, देन आल्सो दे विल गो इनटू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन. एक्चुअली दैट इज वर्स. जिंदा रह के अगर वो छोड़ दे ज्यादा दुख होता है. हाँ, क्योंकि डेथ इज समथिंग पीपल विल गेट ओवर इन 13 days टाइम, 13 days mourning, and most of the people get over it. I'm not saying most of the people, not all, but if there is a relationship where the other person has dumped, आजकल ब्रेकअप होता है, that is even severe. तो उसमें that can be long lasting. You can never forgive that person. अब जिसकी मौत हो गई उसको तो फॉरगिव कर ही सकते हैं, लेकिन जो जिंदा है और वो छोड़ के चला गया उसको माफ करना बड़ा मुश्किल होता है. तो फॉरगिविंग इज अ बिग इंस्टेंस हियर, बिग इशू. करेक्ट. तो अपसेट किस चीज से? व्हाट इज दैट व्हिच इज कॉजिंग यू अपसेट? Tell me the reasons. Tell me the reasons of What upset. you wished, wanted, did not happen. Very good. Yeah. Very good. So very profound reason. हम कुछ चाहते थे वो नहीं हुआ. Yeah.
So it is like I wanted to do something, I could not do it. I wanted to fulfill this expectation, that expectation did not happen. Correct? और क्या reason होते हैं upset के? And Not connect it with your accepting state the of depression situation. also. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? Not accepting the situation as it is. Not accepting the situation means what? Unacceptance. क्या हुआ बताइए मुझे. Situation क्या थी पहले ये बताइए ना. नहीं, जैसे किसी का था वो he himself left the business, हाँ, फिर घर बैठ गए और फिर बोर हो गए, हाँ, डिप्रेशन में गए, एंड देन वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने ही बिजनेस छोड़ा है. Okay. And then going into depression. No. So they wanted success in business, they got failure. Yeah. Let me put it that way. है ना? तो Not चाहते थे failure, सक्सेस, मिला नहीं. छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया. बिजनेस करना चाहते थे, नहीं कर पाए. करेक्ट? नहीं किया, बहुत अच्छा कर रहे थे, but he took out his partnership. Whatever तो happened, घर में सोचे मैं something spirituality happened, right? Something Yeah, happened. something Happened, and that was Yeah. against their wishes. Yeah, something happened. Yeah. Something happened, and they considered that is not what I wanted. मैं ये नहीं चाहता Yeah. था, लेकिन ये हो गया. Now I am a हाँ. failure, or now I can't do it. Hmm. So they again relate it to some kind of a failure. That's why they give up. Why do people give up? Because they think they have failed. They have failed बोलने से फिर भी ठीक है. I am a failure बोल देंगे तो खत्म. बहुत फर्क है ना. I have failed in the exam is one thing, or I have failed in the business is one thing. I failed in a relationship, that is another thing. I am a failure. Now he will fail in all the areas of life. क्यों? Because he had put that failure जो having में था उसको being में डाल दिया. How many of you can get this? I have a failure and I am a failure. क्या फर्क है? फर्क है या नहीं है? I experienced a failure and I am a failure. What is the difference? बहुत फेलियर है, एक एक्सेप्ट कर लेना एंड एक सिचुएशन को कहना कि कोई बात नहीं, आई हैव फेल्ड नाउ एंड नेक्स्ट टाइम मैं पास कर लूंगा. Correct. If I failed now, there is a possibility that I can pass the next time, or I can be a successful person the next time, or I can get success the next time. I am a failure. Now you can't do anything. Now you have to take another birth. This thought, इस birth में तो नहीं हो सकता. Because I am a failure. So they end their life. इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता. Get that point? When you say I am, you are creating yourself. You are putting a label on you. I have में कोई label नहीं है. I am में you are putting a label on your identity. I am a failure. I am an alcoholic. I am a druggist. I am के साथ label लग जाता है. I have के साथ there is an opportunity. Yes, कौन बोल रहे हैं? It's operating from the victim ego. Blame Yeah, game. it will trigger the victim ego. The moment you say I am helpless, I am hopeless, I am worthless, you are triggering the victim ego. If you say I have failed, that's okay. You can be a winner and you can fail. तो उसमें being में नहीं जाएगा. So it's something technical, but you need to understand this. If there is anything wrong in your life, put it in the form of I have an experience. I have. Don't put it as I am, because it will become an identity. It will become a label. Okay. Yes. So everybody clear on this? So upset जो भी आपका है, it could be majorly into 3 categories. Okay, so let me sum it up. Upset is normally into 3 categories. Number 1, you wanted to do something and you could not do it. Major upset. You expected something from someone, or you expected some results to happen. Those results didn't happen. Your expectation did not fulfill. So non-fulfillment of your expectation is a major upset. You wanted to do something, you could not. That is a major upset. You wanted to communicate something and you did not, or you could not, or they didn't allow you to communicate. That is a major upset. You want to communicate something to somebody
and you cannot. That will result into an upset. Is there any other reason for an upset? Tell me. Broadly, all the upsets can be classified into these three categories. Tell me any upset which is not coming in these three categories. Are the categories clear? I'll repeat that. I wanted to do something. I could not do it. I did not do it. Or they did not allow me to do it. First. Second upset. Second reason for upset. Unfulfilled expectation. And third, undelivered communication. Clear? Give me any other reason for upset. आपकी लाइफ में देखिए. Pick up one of your upsets and see. If it is a simple upset, one of these will be there. If two reasons are there, it will be a very serious upset. If all the three are there, then possibly you have not been able to overcome that upset for many, many years, or perhaps it is still on. See for yourself what is happening. कौन सा अपसेट आपको परेशान कर रहा है? अपसेट को हैंडल कर लोगे तो डिप्रेशन की स्टेट में नहीं जाएगा. आई गारंटी यू दैट. अपसेट को हैंडल नहीं करोगे, वो पनपता रहेगा एंड इट विल टेक यू टू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन वेरी फास्ट. तो डिप्रेशन को टोन डाउन करोगे तो अपसेट में आ जाएगा. हैंडलिंग अपसेट इज द स्किल, इज द विजडम which you can practice. So let's have some people share. Theory कुछ ज़्यादा हो गया. Let's have some people share. How many of you can analyze your upset and see if it is in any of these three conditions, three categories? Yes, Rupa, go ahead. शशि, एक्चुअली आई एम अ रॉन्ग पर्सन. तेरे को बोलना ही नहीं चाहिए. अगर तू मुझे छेड़ेगा ना तो मेरा सारा पीछे का आगे आ जाएगा. नहीं, सिर्फ रीजन चाहिए मेरे को. मैं कहानी में नहीं जाऊंगा. I will not allow you to speak. Don't worry. सारे तीनों ही है. हाँ, तो it is a very serious one. It's a very serious one. Correct? And trust me, there is no fourth reason for that. There is only three reasons. इन्हीं तीन कैटेगरी में सारे अपसेट आ जाते हैं. सारे अपसेट. It is a scientific study, by the way. It's not something I have cooked up. It is a scientific study. Yeah. Okay. Yeah. So just relax. Anybody else who want to share? Yes, Vijay ji, go ahead. So I mean classification तो ठीक है शशिधर जी. I think इसका इलाज क्या है? अरे पहले मान तो लीजिए कि यही तीन रीजन है. इलाज शशि की क्लास अटेंड करना है. इलाज तो बड़ा आसान है, वो तो हमारे हैं उस पे. Second part will be that only. But the idea is first we have moved from depression from -100 to a 0 state of upsets. अपसेट तो नॉर्मल है. अपसेट को अगर हैंडल कर लोगे तो माइनस में नहीं जाएगा. अब वहां से उसको 100 पे ही तो लाना है. -100 to 0 तो आ गए हम लोग. How many of you can get my point? Okay. Yes. So now the question is, if you can handle your upset, you will not fall into the negative spiral of events or mindset. Clear hai? Now let me ask you a question. ये जो इंटेंशन थी, जो आप कुछ करना चाह रहे थे, नहीं हुआ, ये इंटेंशन किसकी थी? मेरी थी. क्लियर? ये एक्सपेक्टेशन किसकी थी जो फुलफिल नहीं हुई? मेरी. ये कम्युनिकेशन जो करनी चाहिए थी, किसको करनी चाहिए थी? मुझे करनी चाहिए थी. सो इट इज माय अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, it is my unfulfilled expectation, and it is my, you can say, thwarted intention. Clear है? तो अगर सब कुछ मेरा है, why the hell am I blaming the other people around in my life? It is my upset. I will handle it. When this understanding comes, you start moving in the positive direction, because बाहर की दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं करना है हमको. Yeah, Shashi ji, hold on, Jyoti ji, let me complete the sentence. I will take the sharing after this. Everybody clear on this? First, let it sink into you. It is my undelivered communication. It is my unfulfilled expectation. It is my
intention which was not, which did not give the right result, or my efforts which did not give the right result. So the whole problem of upset is my problem, and I am always upset with outside world. उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई, उसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। आपकी जिंदगी जहन्नुम बनी है आपकी सोच की वजह से, आपके थॉट्स की वजह से, आपके इमोशंस की वजह से, जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। Okay, first understand this. Now let me give you some more analysis. Body is made up of what? We all know we are made up of 5 elements, right? V means the body. Earth element, अगर earthquake हो रहा है तो earth will be in turmoil, correct? Water element, अगर floods आ जाएंगे पानी में, क्या होगा? सुनामी आ जाएगा। फायर एलिमेंट में अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या होगा? जंगल फायर। इमेजिन द जंगल फायर, इट कैन burn the whole jungle down in seconds, minutes. So now imagine when you are upset, what is happening? Your earth element is experiencing a earthquake, your water element is experiencing a tsunami, and your fire element is absolutely raging like a wildfire. Air is like a tornado. Air element is like a tornado. And how many of you have traveled in flight? You have seen the flight में क्या होता है? हाँ, वेदर टर्बुलेंस होता है तो क्या होता है? तो आपका स्पेस एलिमेंट भी टर्बुलेंट है, पांचों एलिमेंट टर्बुलेंट हैं आपके. That is what is happening in depression. You have no control of what is happening in your life. So what is the solution? Your soul calling will actually tell you one of the ways how to be on the path of sadhana. आपके solution एक ही है. जब upset पे आ जाओ, first of all you have to see which sadhana will help you to overcome your transformation of inside journey. Inside journey को transform करना है, correct? So your inside journey means what? आपकी साधना क्या है, सेवा क्या है, सत्संग क्या है? That will tell you how fast you can build your or heal your inner world. Inner world को heal करते ही आपका fire element, earth element, water element, fire element, air element, space element align हो जाएगा, सारे चक्रास align हो जाएंगे. I am intentionally not mentioning of spiritual healing, correct? Because that is the actual thing that we are going to do. Spiritual healing is basically you are healing all the 5 elements of your body, all the 3 elements of your mind, aligning all the chakras. So you are actually healing your inside world, and that will move you from the level of depression to upset to the level of love, peace and joy. जो कि आप ही हो, आपका inner core is always that love, peace and joy. वो तब होगा जब पांचों एलिमेंट में बैलेंस होगा. एर्थ एलिमेंट स्टेबल है, वाटर आराम से फ्लो कर रहा है, तो वाटर जब आराम से फ्लो करेगा इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द अर्थ, राइट और रॉन्ग? पानी आराम से फ्लो करेगा धरती पे तो कहाँ जाएगा? व्हेन यू वाटर द प्लांट्स व्हाट हैपेंस? द वाटर सेटल्स डाउन इनटू द अर्थ, राइट? एंड सनलाइट आती है, सनलाइट इज फायर, इट विल हेल्प द प्लांट टू ग्रो. एयर इज इंपॉर्टेंट and the space gives you the place to expand and grow. So it's simply like saying birds fly in the sky, right? Birds fly in the sky, do everything in the sky, they go to heights and heights, but they come back and build their house on the tree, on the ground. Stability ground पे ही रहेगी, और stability तभी रहेगी जब पांचों elements आपके aligned होंगे. Making sense? फटाफट अपने अपसेट को रिजॉल्व करो, अपने पांचों एलिमेंट्स को अलाइन करो, सारे चक्रास को हील करो और अपनी साधना को पकड़ो. अब आपकी साधना का मार्ग कोई भी हो सकता है. जो ज्ञान मार्ग पे चलना चाहते हैं, नॉलेज पार्ट, उनके लिए ज्ञान योग है. जो भक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, डिवोशन, उनके लिए भक्ति योग है.
जो सेवा करना चाह रहे हैं उनके लिए कर्म योग है, और जो प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए राजयोग है। चारों योग आपके सामने हैं। आपकी जो सोल कॉलिंग है उसको पकड़ो, अपनी साधनों को पकड़ो और आगे बढ़ जाओ। और ये कई लाइफ टाइम्स लगेंगे, बट देन यू विल मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ बीइंग अपसेट or getting upset to the state of love, peace and joy, which is your inner core, which is your center. How many of you can get this? तो कैसे आएंगे विजय जी, क्लियर हुआ? Ultimately it is your spiritual journey only which is going to take you there. इसीलिए बोलते हैं ना, from darkness to light, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय. Darkness to light is the journey. तो चाहे वो डिप्रेशन टू जॉय हो, falsehood to illusion to truth हो, या बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस हो, fear to love हो, जो मर्जी बोल लो आप, जर्नी यही है. And that is what is the session for today, right? Okay, let's have some people share. Rupa, you raise your hand, go ahead. Yeah, मेरे जो तूने बोला है is exactly the same what I want to say. It's like God reckons those, you know, बुलाते ही उनको है जिनको या तो वो खूब पेन देता है, क्योंकि until and unless वो पेन हो ना तो वो कनेक्शन नहीं पड़ता. मेरा कनेक्शन सीवियर जब वो एकदम चला गया ना बियॉन्ड लेवल, तब जाके ही बैठता है उस खुदा के साथ वो कनेक्शन, एंड देन दैट थिंग गेट्स कनेक्टेड एंड यू आर ब्लेस्ड, यू नो. तो मुझे लगता है ये तरीका है बुलाने का, दुख दे के अपने पास वो कनेक्शन करके फिर बुलाता है. आई डोंट नो, आई हैड दैट काइंड ऑफ यू नो. Yeah, absolutely perfect. Very good, Rupa ji. That's exactly the journey. That's why when suffering comes, you should thank the God that the God has given you a wake up call. या कोई वो नहीं है उसको, because there is no, उसका इलाज ही नहीं है. That there is no man, no system who can come and fix your life. Nobody can do that. It is only him. He has to come. So you are going towards him with clear mind, and that connection gets so strong. Like Baba ji, अब तो बख्श दो ना यार, you know, like what you want. अब Right. तो छोड़ दो, किसी और को ढूंढ लो. Got that. Let's acknowledge Rupa ji. Very good. So I'm it is being funny. actually the journey of darkness to light. How many of you can understand this? How many of you got it? The journey of depression to joy is a normal, natural process for the evolution of the soul. Darkness to light. That is what we are moving from. Darkness to light. Falsehood, illusion to the truth. Yes? Okay, let's have somebody else share. Otherwise, Sanjeev is here. So, Sanjeev, your views and your sharing on whatever you think. And Sanjeev is just now back from a heavy session of advanced course of Vipassana, right? So, I hope he will be able to spare his. He's talking very sparingly right now. So I will hand it over to him. Whatever you want to share, Sanjeev, on this topic, and then we come to others. Yeah, let's listen to Sanjeev. Thanks, Shashir, and really I was enjoying listening. For first half an hour, I thought should I open video or not, but then I opened it because I really connected a lot. So it's a lovely topic and much needed topic to talk about. So I'll make it into two parts, a very theoretical and a very lighter part also. Because this is on one side a very heavy topic, depression, but I think we should make it lighter also. So what you shared, Shashi, all, so in my words, if I say, depression is a journey from expression. So generally what Shashi shared, all the 3 points, different tariqas I'm talking. So first life में people want to express, everyone wants to express. यहाँ पे भी हम देखते हैं ना, जब शशि कुछ बोलता है बीच में किसी का मन में आता है, झट से बीच में बोलने लगते हैं, डोंट रेज हैंड और ऐसे करके, एंड फिर शशि को बोलना था होल्ड ऑन आई गिव यू चांस. दैट्स व्हाट शशि डज. So people want to express because people are not getting enough opportunities to express. So expression is the first step. एक्सप्रेशन जब नहीं होता है और नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी या नहीं कर पाते हैं, देन वी मूव टू द सेकंड स्टेप व्हिच इज सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन को सप्रेस कर, अबे सुन नहीं रहे तो चलो, एंड वी इन साइकोलॉजिकल टर्म आल्सो कॉल इट अ प्रिपेयर्ड ड्रामा. अच्छा नहीं सुन रहे ना, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, अब सुनेगा, अब सुनेगी.
दिस इज अ प्लान्ड ड्रामा अनकॉन्शियसली, ये प्रोग्राम्ड ऑलरेडी। तो सप्रेस कर दो। बहुत जगह क्या होता है, जब कुछ चुप हो जाता है, अरे भाई क्या बात हो गई, क्या हो गया क्या हो गया, तो व्हाट पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग, एक्सप्रेशन का मौका मिल गया। वहां जब एक्सप्रेशन फिर भी नहीं हो पाता है, देन रिप्रेशन में पहुंचते हैं। सप्रेस से रिप्रेस, कि नाउ अब अंदर दबा रहे हैं, अब वो अब धीरे धीरे प्रेशर कुकर की तरह अंदर दबने वाला काम शुरू हो रहा है। और वहां पर जब वन एंड देन आई टॉक अबाउट दिस रिप्रेशन में क्या होता है, देन वहां पर भी जब काम नहीं बनता है, देन पीपल गोज टू डिप्रेशन। सो इट्स एक्सप्रेशन टू सप्रेशन टू डिप्रेशन टू डिप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। And that's, I'm talking about properly human psychology. Second depression, second type of depression है आजकल जिसको बोलते हैं स्टेटस सिंबल। आजकल डिप्रेशन स्टेटस सिंबल भी बन गया है। अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने 2 दिन से बात नहीं करी, हाय आई एम इन डिप्रेशन। मेरे को मेरे पोस्ट पे इतने लाइक्स नहीं मिले, आई एम इन डिप्रेशन। दैट हैज बिकम लाइक अ स्टेटस सिंबल दीस डेज आल्सो। तो कोई प्रोसेस नहीं होगा, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, सप्रेशन, सीधा डिक्लेयर, भाई डिप्रेस बोल तो कुछ ना कुछ तो काम बन जाएगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाएगा। सो व्हाट हैपेंस जनरली, जब सप्रेस होता है उसके बाद रिप्रेस होते हैं, रिप्रेशन वाला स्टेज आता है क्रिटिकल स्टेज। सप्रेशन इज अ बेसिक स्टेज, जो शशि बोले 0 तो थोड़ा सा नीचे। सब रिप्रेस इज ऑलमोस्ट -50। एंड जब वहां होते हैं ना, when you are actually quiet, you do not want to talk, तो वहां पर 2 situations क्रिएट होती हैं। now people starts giving you importance। भैया बिल्कुल चुप हो गए, क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहे, खा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। जहां पर जो शशि ने 3 स्टेजेस बताए कि व्हाट आर द 3 स्टेजेस, उन 3 स्टेजेस की शशि इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अरे इस स्टेज पे जो है इतना, ये क्या हो गया, इसको बिल्कुल शांत हो गए, चुप हो गए, खा नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, कुछ हो ना जाए। तो नाउ पीपल स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दी पर्सन। और जब वहां बाय द वे इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है, person remains and chooses to be in repression stage. Understand this point. Person remains and chooses to be in this repression stage and declares himself or herself into the depression. है डिप्रेशन में, लेकिन डिप्रेशन डिक्लेयर करते हैं। क्यों? व्हाट अ लवली सीन। जो वस्तु, स्थिति, व्यक्ति की बात करते हैं, जो नहीं मिल रहा था सब मिल रहा है आपको। सुन भी रहे हैं, बात भी पूछ रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, वैल्यू भी दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज चूजन स्टेट। बट एक्चुअली में जब वहां भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, तब आता है रियल डिप्रेशन। इफ यू कैन कनेक्ट, आप जिसको भी जानते हो अपना, या आप लोगों ने बहुत ने शेयर करा, और इफ यू नो समवन, देन इट कम्स टू रियल डिप्रेशन स्टेज। एंड शशि, व्हाट यू शेयर्ड अबाउट दिस थिंग, जस्ट जब विजय जी पूछ रहे थे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, है ना? सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज कम्युनिकेशन बाय द पर्सन हु इज डिप्रेस्ड। उसको, आप देखिए, शुरुआत कम्युनिकेशन के एक्सप्रेशन रोकने से हुई है। तो अगर आप में दम है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप खुल के एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु इज डिप्रेस्ड। एल्स फ्रॉम द अदर पर्सन, आपके फैमिली में किसी को हुआ या किसी को जानते हो, तो वहां पर अब आपको बहुत बैलेंस्ड सिचुएशन बनानी पड़ेगी। सो आई विल शेयर वन सिचुएशन। एक मॉनेस्ट्री है, आई डोंट नो वेयर इज दिस मॉनेस्ट्री, आई हैव हर्ड अबाउट दैट। वहां पर डिप्रेशन लोगों का बहुत जबरदस्त इलाज होता है। दे से ईदर इन 30 days दिस पर्सन इज कंप्लीटली आउट ऑफ डिप्रेशन, कंप्लीटली आउट ऑफ डिप्रेशन, ओके, और विल टेल यू इन 10 days आप ले जाओ। एंड उस मॉनेस्ट्री में करते क्या है, व्हाट दे डू इज वेरी सिंपल। उनको घर वाले जो छोड़ लेके आते हैं, उनको बोलते हैं अब आप जाओ, और फोन करके भी मत पूछना कि इनका क्या हाल है। पूछना मत, अगर आप पूछोगे उनको हम निकाल देंगे, आके ले जाना। डोंट कॉल अस फॉर नेक्स्ट 10 days, 20 days, 30 days, विल कॉल यू इफ रिक्वायर्ड। एंड देन उस ड्यूरेशन में, फर्स्ट डे में उनको आते हैं, बैठ के कुछ बातचीत करते हैं,
इस तरह से दे हैव सम सिस्टम जिसमें बातचीत करके जो डिप्रेस्ड पर्सन उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, बट संग के संग वो बैलेंस कंडीशन में क्या करते हैं, वो कुछ बोलते हैं, कम्युनिकेशन उन्होंने शुरू करा ऑपोजिट पार्टी ने, उनको एक्शन लेने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल खाना दिया, अब ये बोलता नहीं खाना, ठीक है मत खाओ, वो खाना ले जाते हैं और पूछते भी नहीं है फिर, दे डोंट इवन आस्क कि क्या हो गया, खा लो, प्यार पुचकारते भी नहीं है, एंड देन दे से खाओगे तो बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दी ऑपोजिट पार्टी, जिसको डिप्रेशन नहीं है, उसके ऑपोजिट पार्टी, अगर आप किसी को ठीक करना चाहते हो, किसी को बाहर निकालना चाहते हो, यू हैव टू रियली कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, कम्युनिकेशन एंड गेटिंग देम इनटू एक्शन। अगर सिर्फ कम्युनिकेशन हुआ फिर वो कभी बाहर नहीं आते, उनके लिए बहुत रिलैक्स सिचुएशन होती है, मजा आ जाता है लाइफ में, भाई जो चीज चाहिए था अब बिना मेहनत के मिल गया। सो शशि, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच। Let's acknowledge Sanjeev. Thank you so much, Sanjeev, for a different perspective. Yes, that is how the mind behaves. So experts from the mind coach. Yes, great. Yes. So what is opening up? Anybody else who wants to share? क्या share करना चाह रहे हो? Sir, yes, there is an institute which Sanjeev sir is talking about, जहाँ मुझे भी डालने लगे थे, but but that is not for 1 month, that is for 3 months. Awesome. So That what program. So Gunjan, what you're talking, so let's not confuse that institutes are some centers. That's not the thing we are talking about. वहाँ पे ऐसे नहीं करते, Okay. वो काम करते हैं. We're talking of not institute but a monastery. Yeah, monastery only. That is for 3 months. Okay. That is not important, Gunjan ji. That's Okay. fine. Yeah. We are not here to analyze the monasteries. We are here to analyze our life. So let's have more sharing on the life. Yes. Anybody who wants to share? And Meena Goswami ji, आपने join किया है. Anything you would like to share? What opened up for you in this session? We are approaching the scheduled close, so I will take some sharings now from the guests first who have come for the first time here. So मीना जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? क्या खुल के आया इस सेशन में आपके लिए? आप म्यूट पे हैं, आप पहले अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मीना जी। Yeah. Now, can you hear me? Yes. No, I'm here to listen, just to listen only. Okay. So what are you taking away from the session? Session में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ तो होगा? That I can tell after you conclude. It is concluded, so you can think about it. I'll come back to you. Okay. All right. Anybody else who wants to share? Alok ji, Kumar Trisham ji, anything आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सुशील जैन जी, पूजा, बी गुप्ता जी। हाँ जी. Yes. Just one thing. Suppose there is a young adult or a young person who has depressive thoughts and he is in depression or she is in depression. At that stage, how to convince the person about these things, that to go for spiritual journey and to take him out of this stage, because he is not conscious about these things and he will not understand also. So this is the first thing that we talked about. Whatever they are comfortable with, first of all, we have to do that. And sometimes we have to push you, है ना? कई बार वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप खींच के ले जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो वैसे ही करना पड़ेगा कुछ, है ना? किसी हीलिंग सेंटर जाना है, हीलिंग सेंटर में जाके तो देखो, एक बार होके तो आओ. There are different ways how we pull people, right? And if those are people who are important in his life, he will understand or she will understand. वहां तक तो लेके आने पड़ेगा ना. Doctor will start only when the patient is in front of him, right? Similarly, a healer has to come in touch with the healer, तभी तो healer कुछ करेगा. And then after some time, I mean, he's in a mild stage. Whatever state, it is for the family member or he himself to decide whether he wants healing or not. Expert help के लिए उसको आना पड़ेगा ना. Expert उसके घर थोड़ा ना जाएगा. जा सकता अगर बुलाए तो, बुलाएगा ही नहीं तो कैसे मालूम, right? So this we have discussed, right, in the beginning. You have to somehow manage to get the person to the right location or the right place. Then we can start the process. Correct? But the people around in his life should be aware that he needs help, expert help.
That's important. Yes. Okay, good. Let's acknowledge Alok ji for that. Thank you. हाँ जी, और कौन बोलना चाहेंगे? Sir, can it collapse again and again? Like क्या रिलैप्स दोबारा आ जाता है? अटैक बोल रहे हो? yeah. आ सकता है, आ सर सकता है, बार-बार आ सकता है? बिल्कुल हो सकता है. प्रॉपर्ली अगर रूट कॉज से नहीं निकाला गया उसे, तो बार-बार आ सकता है उससे. सेम सिचुएशन दोबारा प्रोवोक होगी, फिर आ जाएगा. दैट्स व्हाई वी से व्हेन वी डू हीलिंग दैट रूट कॉज से अगर निकल रहा है, कार्मिकली निकल रहा है, इम्प्रिंट्स हट गए हैं, तो फिर दोबारा नहीं आएगा. राइट? ओनली फिजिकल लेवल पे करोगे तो मेंटल इमोशनल लेवल पे तो वो इम्प्रिंट है. तो थिंग्स कैन कम बैक अगेन जस्ट लाइक अ हार्ट अटैक, राइट? Somebody suffers from a heart attack and if the heart is not healed, the attack can come again after 2 years. Stents डालने के बाद भी आ जाएगा. Even if you are on a spiritual journey, still it come back. If you are on a spiritual journey, you are healing your karmas. तो कार्मिक इम्प्रिंट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तब नहीं आएगा. राइट? जस्ट लाइक ए सीड ना, अगर बीज है वहां पे तो सही टाइम पे बीज दोबारा पनपेगा. बीज को ही हटा दोगे, बीज को ही जला दोगे तब नहीं आएगा ना. So you have to understand what is the process that you are following. In spiritual healing, you will burn the seeds. Then it will not come back again. तो रूट कॉज से वो हट जाएगा. Right? Okay, good. Let's acknowledge Gunjan ji for that. Okay, anybody else who has any question? So ultimately, we are talking of healing only. चाहे वो karmic healing हो, spiritual healing हो, you have to burn the seeds of that cause which is present there in the chit as a seed of that depression. वो हटाना ही पड़ेगा. उसकी किसी के लिए साधना है. चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे स्पिरिचुअल हीलिंग करें, चाहे वो ज्ञान के फायर ऑफ विजडम से जलाएं उसे, या फायर ऑफ लव से जलाएं उसे. हाँ, तो ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, यू हैव टू चित्त को तो साफ करना ही पड़ेगा ना. दैट इज द सॉल्यूशन. यस, एनीबडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? सिल्विया जी आज बहुत शांत हैं. एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नो. ओके, हु एल्स? कौन रह गए? कुमार त्रिशम जी, एनीथिंग यू लाइक टू शेयर सर? Hold on, Rupa. Let me ask everybody else first. I'll come back to you. Kumar sir, कुछ शेयर करना चाहेंगे? How was the session for you? Okay. Parth, सुशील जैन जी, पूजा जी, किराना जी या किरण? Okay, किराना जी, बी गुप्ता. Anything you would like to share? आपने कुछ पहली बार आए हैं शायद और आपने कुछ शेयर भी नहीं किया है. Anything you would like to share? Please go ahead. Okay. No. Okay. In that case, Rupa, I'll come back to you. Yes, you wanted to share something. Go ahead. आप म्यूट पे हैं रूपा जी. जस्ट ऑन द लाइटर साइड, जैसे संजीव भैया बोल रहे थे, हम तो डिप्रेशन, आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ. ओके, if I have been in depression, I know I'm spiritual journey connected, अपने आप को ठीक कर लूंगी ये वो, पर जो कमबख्त हमें डिप्रेशन में डालते हैं ना, उनका इलाज होना चाहिए पहले. उनको लेके आओ ना, रखा हो. उनको लेके आओ यहाँ पे, उनको मेरे से मिला दो. प्रॉब्लम ये है कि वो आते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग नहीं आते हैं. हाँ, तो छोड़ दो उनको. जो यहाँ पे होंगे हम उन्हीं की बात करेंगे ना. अभी तो मैं यहाँ पे जो 19 लोग बैठे उनकी बात करूंगा. ठीक है? Yes. Okay, anybody else who want to share? Okay, Rupa, hold on. Let me close the session now. Okay. Yeah, Yes. I just want to say one thing. Yeah, Jyoti ji, go ahead. मुझे बहुत लेटर रियलाइजेशन हुआ कि सेल्फ लव इज वेरी इम्पोर्टेंट. इफ यू डोंट मतलब अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं समझेंगे और सेल्फ लव नहीं करेंगे तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे. तो इसके लिए आई स्टार्टेड doing taking positive affirmations daily. I used to write positive affirmations and this work wonders for me. Absolutely perfect. And that is your sadhana. So you are on the path of your spiritual journey, and that is what is going to bring you out of that depression. And you have actually come out of the depression very, very powerfully. And I can see that in your sharing. I can see that in your when I'm talking to you. Very, very powerfully, you have bounced back in life, and that's wonderful. Congratulations. Yes. So acknowledge Jyoti ji for that. Thanks. Okay, good. Anybody else who wants to share? Right. So in that case, we are already 6 minutes over time. I'll close the session now.
Anybody? Sir, I think Last and final call. Anirudh ji has आपको raised शेयर his करना है hand. कुछ? प्लीज गो अहेड सर, वेट क्यों करते हो इतना? हाँ जी बोलिए सर, कोई बात नहीं। नहीं सर, 1 मिनट लूंगा मैं। मैंने जो अभी इस बारे में अपने जो है इसके बारे में सोच रहा था मैं आज, कि जो ये डिप्रेशन है और जो फील जो है इसका प्रिकॉशनरी मेजर क्या लिए जाएं कि डिप्रेशन ना आए और जॉय में रहें। तो मैंने 4 पॉइंट्स सोचा है इसके लिए। पहला तो है हेल्थ का है, वन शुड बी केयर फॉर आवर हेल्थ। सेकंड है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हर एक को अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी जितनी जल्दी ला सके। दूसरा है कि अपने गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए, बेस्ड ऑन कैरियर हॉबीज के बेस पर अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए, तो उसको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चौथा पॉइंट है कि जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि अपने में डिवाइन को देखें, दूसरों में देखें और औरों की हेल्प करें। तो ये 4 पॉइंट है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए। और 3 पॉइंट मैंने सोचे थे इसको कैसे हैंडल करना है, जो आपने ये सारा आपने बहुत डिटेल में सारा बता दिया है। जो मेरा था पहला था पॉइंट था कि जो भी जब डिप्रेशन को एक तो शुरू के स्टेज में ही उसको पकड़ा जाए, जैसे आती है डिप्रेशन, पहले तो है कि उसको डिस्कस करो, शेयर करो, ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट करो, अभी बात हो रही थी कम्युनिकेशन की, शेयर करो, डिस्कस करो। सेकंड जो है, जब डिप्रेशन के जो है उसके लिए तो जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है कि अपना डेली रूटीन एक लिस्ट बना ले, उस पर ध्यान दें, अपनी लिस्ट पर, उससे माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। और तीसरा जो है कि एक्शन जो है, जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोल्व करना है, उसके अपने जो जब डिस्कस करोगे और शेयर करोगे तो वहां से एक्शन भी निकल आएगा, तो उस पर एक्शन लेना है। और उसके ये हो गया इस हैंडल करने का। और जॉय के वही रीजन है जो मैंने बताया था, जो प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं, वो चारों रीजन जॉय के आ जाएंगे। बस इतना ही कहना है। आपने पहला पॉइंट क्या बोला है? पहला ये इसमें हैंडल में जी नहीं, मैंने रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट है हेल्थ, दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तीसरा अपना गोल्स क्लियर होना चाहिए, चौथा डिवाइन इन वन एंड अदर्स एंड हेल्प अदर्स। ये 4 पॉइंट है। Right. Thank you, Anirudh ji. Let's acknowledge Anirudh ji for his sharing. Okay, good. Right. So with this, we come to the end of the session. Unless anybody else wants to share. Anybody? Last and final call. Okay. Nobody. Okay, fine. So we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. I hope this session was valuable. So watch the recording again and send this recording to all the people whom you think can benefit from this session. And enjoy a great week. And we meet again with a new agenda next week, next Wednesday. Thank you very much. Aham Brahmasmi. Sir, please, new members can send the numbers in the chat. New members I'll can note down. write down your name and numbers in the chat so that we can get in touch with you and we can send you the recording of this session. You can watch that again and come back and attend the next week also. Yeah. So please write it down. All the new members. So who are the new members here today? We have Meena ji. Meena ji, आप chat box में लिख दीजिए अपना नाम और contact detail. And we have Kirana ji, B Gupta ji. Yes. So these are the 3 people. And iPhone. I don't know who is this iPhone. But अगर आप पहली बार आए हैं तो अपना chat box में आप अपना नाम और phone number लिख दीजिए. Yes. So thank you very much. Enjoy a great week and we meet again next week. Aham Brahmasmi. Bye-bye. Good night. Good night. Or you can contact me here. गुंजन जी, आप अपना नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में. हाँ जी, मैंने लिख दिया सर अपना नंबर. हाँ जी, मैंने अपना नंबर मीना जी ने लिख दिया है. You can just note down. Yeah. Thank you. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, sir.